Okay, hi everyone, welcome to another session. So in this session, we are going to learn about the JavaScript operators. Okay, we in the last session we just saw how we can create the data type with the help of JavaScript. Okay, what are all data types we can use in the JavaScript? Okay, this function data type we will learn once we got the understanding about the functions. Okay, because this is highly depend upon the functions only. So that's why we have just moved the topic inside the functions here. Okay, functions topic. So once you got the understanding of these 4 to 5 topics, you will get the understanding of this. Now let's focus on the operators. What are all operators available in the JavaScript? First is arithmetic operator. It is fairly straightforward. It is just a mathematical things. Okay, so arithmetic operator. Arithmetic operators. Arithmetic operators are like plus, comma, minus, comma, multiplication, division, and modulus. So these are your arithmetic operators. You all know. Okay. So by using this, we can do the calculations on two different numbers. Okay. So operator means you can do the calculation on operand. What is operand? Operand means whatever you are having in left side and right side of your operator, that is your operand. So it will just allow you to calculate some values on the basis of those two operands. Okay, let's say I have one integer when number a equal to 10 and in b equal to 20. Okay, तो क्या होता है कि ये दोनों नंबर्स का मुझे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है. तो यू कैन डू लाइक दिस अलर्ट a प्लस बी. सो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? ये जो प्लस ऑपरेटर है, इट इज बेसिकली प्लेइंग द रोल ऑफ do the addition operation on these two operand. A and B both are operands, and you are basically doing the addition between these two operands. Okay, so what will happen? A plus B equal to 30. See, this is the 30. So this plus operator will be basically do the operation between these two operands. Okay, which kind of operation? Addition operator operation. If you want to do the subtraction, you can use minus. Okay, so it will become minus 10 because 10 minus 20 minus 10 obviously. Okay, if you want to do multiplication, it will do like this: 10 into 20, it becomes a 200. Okay, and डिवीजन आपको करना है तो आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने उल्टा किया b इस पर, b डिवाइडेड बाय a. b में क्या है? 20, a में क्या है? 10. so it should display the output as a 2. okay, that is true. एंड ये जो है रिमाइंडर लाके देता है. ओके, रिमाइंडर यानी जैसे कि मेरे पास मान लो अभी 21. ओके, 21 डिवाइडेड बाय 10, आपका रिमाइंडर आएगा 1. ओके, तो रिमाइंडर इफ यू वांट आफ्टर डूइंग द डिवीजन यू विल गेट, यू कैन यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर. इसका नाम परसेंटेज नहीं है, इसका नाम है मॉड्यूलस ऑपरेटर. सी, यू विल गेट द वन रिमाइंडर हियर. ओके, सो कोई भी आप डिवीजन का ऑपरेशन करते हो तो उस डिवीजन के ऑपरेशन के बाद आपको दो टाइप के आंसर आते हैं. एक आता है रिमाइंडर, एक आता है आंसर. So answer, if you want, you can use division operator. If you want reminder, you can go with the modulus operator. So these are your arithmetic operators. Okay. If you go next, there is a assignment operator. Assignment operators are like, okay, assignment operator. The assignment operator क्या क्या है देखो, इक्वल टू है, उसके बाद प्लस इक्वल टू है, उसके बाद माइनस इक्वल टू है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू है, उसके बाद डिवीजन इक्वल टू है. तो दीज आर योर असाइनमेंट ऑपरेटर. ये क्या करेंगे? बेसिकली इट विल असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जैसे कि राइट में मेरे पास 10 है, और ये 10 मुझे ए में डालना है, so it will assign this 10 to a, it will assign this 21 to b. So like that. Okay, if you want to assign the right side value to the left side variable, you can go with the equal to operator. It's fairly straightforward. Okay, अगर मैंने ऐसा किया जैसे कि प्लस, ओके, प्लस इक्वल टू बी, ऐसा कर दिया. ओके, लाइक दिस. व्हाई इट इज शोइंग एरर? Plus equal to b, why it is not working? Where b plus equal to a. Not sure, might be JavaScript में नहीं होगा वो, ठीक है, but it should be there.
उल्टा है शायद, इक्वल टू प्लस रहेगा। ओके, ये क्या करेगा कि पहले एडिशन करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। चल लेट्स चेक। ओके, माइनस, देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, ये क्या करेगा, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू। ओके ओके, गॉट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड b इज इक्वल टू 20, और अगर आपने अभी ऐसा किया b प्लस इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, b के अंदर a का वैल्यू ऐड हो जाएगा। मतलब अभी अगर आपने b प्रिंट किया है यहाँ पे, तो क्या होगा वो देखो, b में क्या है, 20 है, 20 प्लस a की वैल्यू, जो भी आउटपुट आएगा वो b में चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट दिस प्लस ऑपरेटर डज, it will basically do the operation, addition operation between these two operand. Whatever value you will get, that value it will again reassign to the b variable. So in this case, line number 11, what it will do, it will add 10 into 20, whatever value you will get, that is 30, 30 it will assign to the b. So if I run this program, we should get the 30 as an output. See, 30. So let me do one thing, let me just split this operation into multiple expressions like this. B is equal to b plus a, सिंपल। इंटरनली ऐसा करता है, ये जो है b प्लस ए इक्वल, बी प्लस इक्वल टू ए, ये जो है 11 नंबर का लाइन, इंटरनली उसका ऐसा काम चलता है। ओके, क्या करता है ये, इट विल बेसिकली, दो ऑपरेटर्स है प्लस एंड इक्वल टू, उसको मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया, यहाँ पे इक्वल टू डाल दिया, यहाँ पे प्लस डाल दिया। सो बी प्लस ए दोनों का वैल्यू आएगा 30, 30 वो असाइन करेगा बी को। अगर आपको ये बार बार लिखना नहीं है, दो बार मैंने बी लिख दिया, अगर आपको ये शॉर्ट हैंड, इसका शॉर्ट हैंड लिखना है, कम लाइन में कम कैरेक्टर्स में, यू कैन गो विद दिस प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, अदरवाइज यू कैन एनी टाइम यूज दिस वन। ओके, दिस इज मोर अंडरस्टैंडेबल देन दिस। बट अगर आप डेवलपर हो, आपको पता है प्लस इक्वल टू क्या करता है, यू कैन गो विद दिस एज। ओके, सो इसका जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ये वाला एक्सप्रेशन। So same for minus, multiplication and division. Okay, these are the assignment operators. Next है string operators. Okay, string operator यानी कि अगर string यानी आई थिंक ये प्लस की बात करें। ओके, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि अगर आपको दो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट करने, जैसे कि मेरे पास दो स्ट्रिंग है, जैसे कि where my first name equal to संदीप, where last name equal to पट, ऐसे मेरे पास दो अलग अलग स्ट्रिंग है। Now, I wanted to concatenate these two variables and generate the full name. तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम, इससे क्या हो जाएगा, वी आर बेसिकली डिस्प्लेइंग द आउटपुट एज अ फुल नेम। जैसे कि फर्स्ट नेम मैंने यहाँ से उठाया, प्लस यहाँ पे स्पेस डाल दिया, प्लस लास्ट नेम मैंने यहाँ से यहाँ पे उठा लिया। ओके, नाउ इट विल बिकम योर फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। सी, दिस इज योर आउटपुट, संदीप पाटिल। Got it? So it will basically generate the full name with the help of plus operator. Plus operator will basically concatenate your string variables together. आप बोलेंगे सर आपने अभी 2 मिनट पहले बताया कि प्लस ऑपरेटर तो अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, वो 1 + 1 2 कर देगा, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये फिर से कॉन्केटेनेशन का ऑपरेशन करेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि अभी मुझे कॉन्केटेनेशन करना है, अभी मुझे एडिशन करना है, उस ऑपरेटर को कैसे पता चलेगा? तो दैट ऑपरेटर विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा टाइप। अगर आपका डेटा टाइप नंबर है, दोनों में नंबर है, वन यहाँ पे है, वन यहाँ पे है, तो वो 11 नहीं करेगा, वो क्या करेगा, 2 कर देगा। लेकिन आपके पास वन ऐसा है और वन ऐसा है इन द डबल कोटेशन, इस दिस टाइम वो 11 कर देगा। क्यों 11 कर रहा है? क्योंकि आपके पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ओके, अगर आपके पास ऐसा रहेगा ना, 1 + 1, दिस टाइम वो क्या करेगा, हाँ वन मोर थिंग, ये निकालना पड़ेगा, दिस टाइम वो क्या करेगा, 2 कर देगा। देखो 2 कर दे। लेकिन अगर आपके पास डबल कोटेशन के अंदर वन है, तो इट विल थिंक दैट ओके बोथ आर द स्ट्रिंग, आई हैव टू डू द कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन।
ओके, दिस इज द कॉन्केटेनेशन 11। 1 + 1 11 कर दिया उसने, क्यों? क्योंकि बोथ आर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। 1 + 1 2 ही होता है अगर बोथ आर नंबर्स, अगर नंबर्स है दोनों तो ये दो ही करेगा, टू ही करेगा। Okay, so that is the difference. How that plus operator will identify whether to do concatenation operation or the sum operation, it is all dependent upon your data type of the variable. Okay, I hope we'll stop here. We'll see this topic tomorrow. Okay, I'm just